So question is that in triangle AOC, sorry ABC, little bit downside I will draw because ये समझ में नहीं आएगा. In triangle ABC, bisectors of angle A and angle B, bisectors of angle A and angle B intersect each other at O. So this part and this part equal, this part and this part equal. Angle C is equal to 70 degree. We have to find AOB. Okay. So just write given based on this information. So in triangle ABC, AO and BO bisects angle A and angle B respectively. So AO and BO bisect angle A and angle B, दोनों को bisect करना है. Okay. Angle ACB equal to 70 degree. This is 70, and to find, we have to find angle AOB. This part we have to find A. AOB we have to find. Okay, clear? यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ ना? Yes, sir. Okay. So what do you mean by bisector? Bisector means divide into two equal parts. अगर हम लोग को मुझे कौन सा चाहिए? AOB. I want AOB ना. तो देखो अगर मुझे AOB चाहिए, this one. Suppose I want AB and AOB. So मुझे ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए. Okay. If I know this angle and this angle, then sum of angle of triangle से O की वैल्यू आ जाएगी. So first मैं इसको find out करता हूँ. See OAB, this one is the half part of A, correct? ये bisector है. Bisector means divide into two equal parts. So ये पूरा, if this whole is 2x, so this part is x and this part is x. So angle AOAB equals angle OAB is equal to half of angle A. A का हाफ क्यों हो गया? Why this one is a half of A? Because ये bisector है. ये पूरा ये एंगल था. ओके, सपोज ये पूरा 2x था. यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो 2x से डिवाइड इनटू x and x. So this OAB, that one is a half. ये हाफ पार्ट हो गया of total angle. Understood? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AO bisects angle A. Same this side also, OBA. Angle OBA is equal to half of angle, कौन सा एंगल का हाफ है? B. Because BO bisects angle B. ठीक है, अभी इतना रहने दो, इसको कुछ नहीं करने का. Just forget now everything. Now we have this triangle ABC. ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC. So we have property sum of angle of triangle is equal to 180 degree. Third. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. That is sum of all angles of triangle is equal to 180. So value of A हमें हमारे पास नहीं है, angle B we don't have, but angle C we have 70 degree. It is given 70 दिया देखो, ACB this is 70. So whatever this 70 plus है that side minus होगा. Angle A plus angle B is equal to 180 minus 70. So angle A plus angle B is equal to 110. Okay. So this is 110. But students हमारे पास वैल्यू कौन सी? We have half angle A, half angle B. तो हमें half चाहिए. We want half. तो हम लोग मल्टीप्लाई करते each and every को, दोनों साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करते half से. Half of angle A plus half of angle B is equal to half of 110. Multiplying
बाय हाफ, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किससे किया, हाफ से किया. सो if I multiply both side by half, so see half of a की वैल्यू क्या है हमारे पास, OAB. so यहाँ पे पुट अप करो half of a एंगल OAB प्लस हाफ ऑफ b की वैल्यू क्या है, OBA एंगल OBA. एंड 110 को हाफ करोगे तो इट बिकम 55 डिग्री. सो ये वैल्यू कहाँ से मिली तुम लोगों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. From with the equation first and second half of A को put up किया हम लोग ने OAB, half of B we put up OBA, OAB OBA and this one is of 55. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Okay. So now Yes, sir. this triangle, ये छोटा वाला अंदर का triangle है ना, this part AOB, we will take this one. In triangle AOB, comma. Again we have to use sum of angle of triangle, but here we have to use three alphabet. OAB, angle OAB plus OBA, OBA plus angle AOB, AOB is equal to 180 degree. Reason क्या आएगा, sum of angles of triangle. Okay, so students देखो यहाँ पे this value OAB plus OBA कितना था, 55. so ये वैल्यू है हमारे पास OAB plus OBA. देखो see OAB plus OBA is 55. so in the place of this we can write 55 plus angle AOB as it is equal to 180. कहाँ से आया 55, फ्रॉम इक्वेशन 5, जस्ट राइट फ्रॉम 5. नाउ 55 प्लस दैट साइड माइनस होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री. एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना होता है, 125. आ गया तुम्हारा एंगल. AOB चाहिए था, AOB की वैल्यू आ गई 125. Understood? Yes, sir. Yes, sir. See, a diagram is given, two parallel lines are there. Dotted line shows the construction. This side is B and D, I think so. And the given information is given information is AB parallel to CD, this one, and PQ is a transversal. Okay. Important definition है ray, information है ray PT. This one is a T. Ray PT and ray QT bisects angle BPQ and angle DQ PQD respectively. So we have to prove angle PDQ is equal to 90 degree. Okay. Just a minute, I will check कि मेरे पास एक कलर का पेन है क्या. I have. So students, bisector means what? These parts are equal. कौन कौन से part?
If this one is a x, then this one also x. If this one is a y, then this downside also y. Bisector means divide into two equal parts. Same है like the previous one. इसको मैं like this. This one is a B, P and Q. ना PT PT is a bisector of P. So and respectively word है respectively means what? First is a bisector of first and second one is a bisector of second. PT is a bisector of B, P, Q. So ये PT suppose यहाँ पे है T. So this PT is the bisector means this part and this parts are equal. ये दोनों part equal है. Okay? और कोई भी एक part, any one of part is a half of whole. ये पूरा लोगे तो कितना होगा? It become 2x. Okay? This is x, this is x. The total is 2x. So अगर मैं एक लेता हूँ, so this part QPT is a half of total. ये 2x है, तो ये x है. So this one is a half of the whole. वही लास्ट हमने जो कंसेप्ट यूज की थी वही हमें यूज करना है. प्रूफ फर्स्ट. सो वी हैव टू टेक इनसाइड. ये ट्रायंगल वाला हम लोग को अंदर वाला लेना है. तो QPT एंगल QPT इज अ हाफ ऑफ एंगल. कौन सा एंगल है? BPQ. Why that is half? Because this PT is a bisector. PT bisects angle BPQ. समझ में आ रहा है इतना क्या कर रहा हूं मैं? Understood? अच्छा. Okay. Yes sir. मैं डाउन साइड वाला पार्ट उठाऊं. This one is a PQD. See, this one is a PQD. Here QT, एक T है. So this is y, then this one also y. Because it is a bisector, तो ये अंदर वाला पार्ट है. We will take inside part. ये अंदर वाला लेना है हमें. See, so PQT, angle PQT is a half of angle. कौन सा था दूसरा वाला? PQD. Again, you can write QT bisects angle PQD. So therefore we are taken half of. Okay. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. So see again the parallel lines here. Originally A, B, Q and D. This one is the transversal P and this is Q. So this P and Q, which type of angle? कौन से टाइप के एंगल है? BPQ and PQD. Which type of angle है? अंदर वाले कौन से टाइप के एंगल है? Interior angles. What is the property of interior angles? Interior angles are supplementary. Interior angles are supplementary. Correct. Means sum of these two angles is 180 degree. 180 degree. So हमें वही concept लेना है. But first we have to write AP parallel to CD. This is given. Then just write angle BPQ plus angle PQD is equal to 180 degree. Just write interior angles. इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180. बट हमें प्रूव करना है 90 डिग्री. सो जस्ट डू वन थिंग, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय हाफ से उसको मल्टीप्लाई करो. सो just a minute. Okay. Multiply each and every term by half. So फिर half angle BPQ plus half angle PQD is equal to half into 180. So just write multiplying by half. Half से multiply किया. So whenever you multiply this one by half, 6 numbers. So half of BPQ क्या है? half of BPQ की वैल्यू देखो. half of BPQ
is equal to QPT है QPT half of PQ is equal to QPT from first in the place of this you can write or इधर ही लिखो angle QPT plus half of PQD is PQT angle PQT and half of 180 क्या होता है 90 कहाँ से वैल्यू आई इट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जस्ट राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओके so we have QPT plus PQT is equal to 90 degrees now students अभी क्या करना है सिंपल ट्रिक है दिस अंदर के साइड में तुम लोग देखोगे दिस बिकॉज़ ऑफ डॉटेड लाइन एक ट्रायंगल बना है this triangle this is P this is Q and this one is T okay and we have to prove PTQ कहाँ पे दिख रहा है this PTQ is 90 this one is 90 हमें प्रूव करना है and these two values we have sum of these two देखो QPT PQT we have so we write in triangle PTQ statement number 7 so QPT यहाँ पे QPT angle QPT plus angle PTQ PQT plus angle PTQ is equal to 180 reason sum of angle of triangle sum of all angles of triangle is 180 so addition of these two QPT plus PQT is equal to 90 so in the place of these two we can write 90 plus PTQ is equal to 180 as it is so this 90 left hand side में plus है whenever we shift that one to right hand side angle PTQ 180 minus 90 so angle PTQ is equal to 90 degree this one only we have to prove है देखो PTQ 90 प्रूव करना था प्रूव हो गया then right hand sum over